both sex and spirituality appear to be separate and different, but essentially they are interconnected. Perceptions may of course differ, but intrinsically they are not only interconnected, they are not in opposite, they are not antagonistic, they are not in conflict with each other. Rather, they are part of a continuum. Spirituality, in a sense, means to achieve a certain state of freedom, liberation. Sex, if it can be incorporated, if it can be applied along with meditation and awareness, the sages say it also can bring us to the state of liberation. The necessary thing is for us to understand and explore briefly what is the mystery of sex and spirituality. Now, one thing we have to acknowledge, and that is that sex is not created by us, it is not manufactured by us. It's a gift of the divine. God has given this life energy, this creative energy, not only to humans, but to animals and to birds. So it is a given thing. It is not that you and I have created it. The only problem is that we apply double standard in accepting this reality. In fact, we are so hypocritical, often schizophrenic, in recognizing the power, the existence, the reality as is known as sex energy. Well, it so happened that a teacher walks in her class, it's a Friday morning, and she gives a whole lecture for 1 hour on the importance of Jesus Christ. At the end of her lecture, she tells to the class that I have a question, and whoever will answer that question correctly and rightly will not only be allowed to go home and enjoy the weekend, but I have a box of chocolates which will be given as a reward. So after the lecture, she asked Nancy, she's from the United States, she says, Nancy, tell me, who is the greatest man to have ever walked on this earth? Nancy said, of course, George Washington, the greatest man to ever walked. She said, well, that is good, but that is not the answer I was looking for. She turned to Linda. Linda was from the Great Britain. Linda said, ma'am, of course, Sir Winston Churchill, the greatest man to have ever walked on this earth. She says, yeah, that's good, but that is really not the answer I was waiting for. She turned to Ramesh, who was from India, and Ramesh said, ma'am, Mahatma Gandhi, the greatest man to have walked on this planet Earth. She says, yes, that's good, but that is really not the answer I was looking for. Finally, she turned to Michael, who was sitting way back in the class, and says, Michael, what do you think? And Michael got up and said, of course, Jesus Christ, the greatest man to have ever walked on this earth. And the teacher was very pleased. She says, yes, that is the right answer, and I was waiting somebody would answer that. So you can come here, and you can take this box of chocolates, and you can go home and enjoy the weekend. Michael walks in, accepts the box of chocolates. As he was walking out, she stopped him and said, Michael, come back here. I want to ask you something. Aren't you Jewish? Michael said, yes, ma'am, I am. So she says, shouldn't you have said that Moses is the greatest man to have walked on this earth? Michael looked at the teacher and said, you know, ma'am, deep down in my heart, I know that Moses was the greatest man ever to have walked on this earth. But then, business is business. Chocolate box is more important than what I feel or what I think. We have applied this double standard in terms of recognizing what the reality is. Of course, it is rather hypocritical. But then, I feel that next to God, sex is the most misunderstood subject. And if I were to replace God with spirituality, then spirituality, next to spirituality, sex is the most misused term. The reason is that sages have seen sex in terms of spirituality and sublime form of energy. They have seen this orgasmic union, enlightenment
of dissolving male-female yin-yang polarity. The transformation of creative energy into spirituality can be accomplished through a miraculous alchemy of meditation. Now, of course, there are sages like Malangavad Sen who have given his enlightened view on sex, and then there is a galaxy of enlightened mystics, enlightened masters, Bhagwan Buddha, Bhagwan Mahavir, Sant Kabir, Guru Nanak Dev, Raman Maharshi. All these people have given enlightened view on the universal view of spirituality. Osho has given his vision and his insight on both sex and spirituality. And his basic contention is that one needs to surpass the narrow and the ignorant and bigoted perception on both these issues. His vision contains a fundamental principle that sex energy is to be transcended rather than condemned, that only when one has understood, experienced, and seen the limitation as well as the futility of the physical or the sexual pleasure can one take first steps in spirituality. His insight is to be natural. The Rishi of the Rig Veda says, Ritasya yatha preta. Live naturally, live according to the natural laws. If sex is accepted as natural and as healthy form with awareness, then there is no harm. Then one can actually evolve from the gross to the subtle to the sublime. Osho neither encourages sex nor does he condemn it. He has simply tried to make sense and given meaning to sex, and a process which is basically directed toward finding meaning is essentially spiritual in nature. Sex normally is either condemned or taken for granted. There is hardly any conscious effort to know what it really means. What is this universal creative energy? Spirituality is all about search for the meaning of that which is, why it is, and why it is the way it is. And in that search of the meaning, one automatically sees that which is meaningless. Once intelligently recognize the meaninglessness automatically drops and one simply evolves. Now, as far as sex is concerned, on the one hand, we are culturally blind. As Prabhuji mentioned, there is a variety of dimensions on which it is manifested: art, literature, music, dance, you just name it. And then there is also another, on the other hand, we are meaning blind in the sense that we have not really understood what this creative energy is all about. Osho has cultivated a kind of intelligence to know that what sex is all about and how to deal with this energy spiritually. Now, the Western view limits sex to procreation and recreation. The Eastern approach includes a third dimension, and that of spiritual sublimation, a dimension that brings about a transformation of the creative energy and a transcendental experience of unity, union, orgasm. While around sex, West has produced either clinical manuals or pornographic paraphernalia. In India, Kama Sutra has been looked upon with the same exalted view as have been looked the Upanishads and the Dharmashastras. The East has always favored the ultimate experience, and they have called it ecstatic, ecstasy. I would like to bring to your attention something that I came across in the Chandogya Upanishad, in which it is described, where there is ecstasy, there is creation. Where there is no ecstasy, there is no creation. In the infinite, there is ecstasy. There is no ecstasy in the finite. Now, the Indian sages have described this ecstatic state in terms of calling it as Brahmananda Sahodar, sibling of the divine bliss. So sex can be an ecstatic. The energy can be experienced in ecstasy through awareness. And I would like to invent a word here
to make this little more clear, we may like to call it as sextasy. Sextasy would mean a sexual union in the orgasmic state. One arrives where there is no thought, no idea, no mind. One goes beyond it all. And it may last even for a moment. It may be just like a mini samadhi, but it is a samadhi nonetheless. So we can see fourfold evolution of sextasy. One is sex, which is union of the two bodies. Second is love, which is union of two hearts. Thirdly, prayer, which is union of the individual self with the universal self. And fourthly, the beyond, a state where there is no duality, which is beyond the mind, beyond heart, and beyond the body. So we can see actually three levels of sex. One is the biological level, man ka tal, the pleasure of the body, dehanurakti. It is gross, it is visible, and it is often lustful. The second one is a psychological level, man ka tal. We may call it bhavanurakti. It is subtle, it is tangible, it is loving and flowing. And the third one, the spiritual level, adhyatmik tal, paranurakti. It is invisible, it is transcendental, good for all, kalyankari, and eternal. So really speaking, if we are really honest about it, sex is the center point that connects with pleasure, joy, fear, love, anger, longing, disease, and samadhi. One needs to be honest enough to recognize that sex is the main center of life. Not God, not prayer, not soul, but sex is the main center. We have to be honest with that. But the only thing is that one has to go beyond it. One has to accept it. And this is where I would like to quote Osho. He says, and while you are meditating, your maturity comes sooner. Your centering comes sooner. Your awareness about things becomes clearer every day. And sex is going to be the first victim of your awareness. The other things will follow because sex is the very root of your animality. Once sex drops off, as if tree has lost its roots, then branches cannot remain green any longer. And he says, your anger, your jealousy, your violence, your inferiority complex, your superiority complex, all kinds of your neurosis, psychosis are just branches. They will start dying by themselves once you have gone beyond sex without fighting with it. And then he concludes by saying, and that is my basic difference with all religions. They have been trying to drop sex. I am not telling you to drop it. Sex is to be accepted with deep respect. It is our heritage. We are born out of it. It is in our every fiber and every cell. To condemn it is to condemn oneself. So in the Indian culture, we have to also admit that we must not forget, we talk about the four achievements, the four accomplishments, purusharthas. These purusharthas are dharma, righteousness, truth, awareness, earth, making money, creating wealth, calm, enjoying the pleasures of the body, the world all around us. You can make as much as you can in this whole idea of calm enjoyment. And fourthly, moksha, liberation. The only interesting part is that dharma is in the beginning. So even if one has to enter into calm or all these dimensions, it has to be through awareness, through righteousness. There is a particular awareness that sits there, which is dharma. And then it says one has to go beyond kama, beyond these pleasures, and ultimately reach to the point of liberation, moksha, freedom. So we have to admit that our sages have given due respect to this particular aspect of our human life, and it has been accepted as an integral part of our human existence. Now, among the possible dimensions that relate to sex, such as biology,
medical science, genetics, psychology, mythology, and spirituality, may I also bring to your attention mental health is a significant factor connected with sex. How important is a satisfactory sex life for good mental health? Let me bring to your attention that according to a study that began in 1970, which has analyzed thousands of adults at San Francisco's Institute for Advanced Study of Human Sexuality, people with fulfilling sex life were found to be less anxious, less violent, and less hostile. Not only that, but they were seen as very likely or not likely to blame others for their misfortunes. Finally, just as the Taoists in China believed in yin and yang polarity, we find in India female Shaktis or energies, Saraswati, Lakshmi, Kali, Durga. In fact, Shiva and Shakti indicate male and female qualities in a harmonious balance. Freud also explains how each one of us carries a male and female quality, and that an imbalance between the two does lead one to a behavioral psychopathological state. Freud's protege, Carl Jung, gives us a better understanding of the dynamics between male and female principles within all of us. Despite the fact that there are basic differences between male and female, we all carry both male and female genes. Psychologically, we have both sexes within us, though one or the other may be more predominant. As for man, Jung calls the inner woman anima, while the inner man within a woman, Jung calls it animus. So this helps us to understand the 4 stages of transforming sex. The one, meeting of the outer man and the outer woman. The second is inner, that would lead us to experiencing the inner man and inner woman, which can also lead us to experiencing the union of inner man and inner woman. You may have seen symbolically, very beautifully, it has been presented as the whole image of Ardhanarishwar, that we carry both principles within us. And this, to beyond all polarities, attaining the state of total inner contentment. That is brahmacharya. Meditation is a way to transcend the polarity within. Meditation takes one away from all dualities. The alchemy of transforming the sex energy lies in the understanding of these 2 principles in each one of us, man or woman, anima or animus. Both can work as complementary and not in conflict with each other. Then one begins to become integrated. Then anima and animus melt into each other. The Bauls, the mystics from Bengal, put it so beautifully in a song, and I would like to share that with you. The song says, "As the man and the woman in me unite in love, the brilliance of beauty, balanced on the bipetal lotus bloom in me, dazzles my eyes. The rays outshine the moon, and the jewels glowing on the hoods of snake. My skin and bone are turned to gold when the inner man and the woman meet. When Krishna and Kali become one, my skin and bone are turned to gold. I am the reservoir of love, alive as the waves. A single drop of water has grown into a sea, innavigable, unnavigable." So, as these principles circulate and come closer to each other, there is an inner orgasm, an inner intercourse between the two, a meeting of the man and woman within us. It is at this point that one becomes a celibate in the true sense. Celibacy need not be seen as an opposition or against sex. It is, in fact, a transmutation of sex. Hence, the sex energy is, in fact, a prerequisite for such a transformation to take place. Celibacy, say the sages, is not the primal cause, but the consequence emerging out of anima and animus merger. Generally, our attitude towards sex shows our repressed state of mind,
Our puritanical approach to the universal reality appeals to one who is either sex indulgent or sex repressive. Our challenge is that we forget being aware, we forget our true nature. A guy was walking down the street, it was a Sunday morning, and somewhere he had forgotten his hat. So he was kind of disturbed with that. He came across a church. So he thought, why not go into the church and steal a hat? So he enters into the church, and the sermon was on. So he waited until the sermon was over. After the sermon was over, he approached the priest and says, Reverend, thank you very much. You really have saved me today from committing a sin. I really very much appreciate it. The priest was very pleased. He says, my son, tell me, what kind of sin were you going to commit, and what did I say that stopped you from committing the sin? So he said, sir, I had walked in here to steal a hat, but when you came to the point of explaining the 10 commandments, and you began to talk about, thou shalt not commit adultery, I remembered where I forgot my hat last night. We forget. This forgetfulness is sin. Actually, the very word sin means to forget. We forget how to be aware, how to be alert, how to be conscious. And therefore, I would like to conclude by saying that we need to remember to give up aware, respectful, and natural attention to sex, which can lead us to superconsciousness. I wonder, sir, if perhaps this forum could turn out to be a reminder to put God instead of the devil back in the bed. Thank you. Thank you, Swami Vedant. You want God to be put to the bed. That's an interesting proposition that only nominee of the God can answer. And you have also given new meaning that sex is, of course, the central point to human life. समझ में आया सर कह रहे कि sex आप समझिए मेरा तो सब्जेक्ट ये आपके काम की चीज़ है. And of sex can provide a golden glow to the human skin. तो आपके ये सब योगा होगा ब्रीथ क्या जरूरत है उसकी. तो इसलिए अच्छा मैं बताऊंगा ना. आप आइए बताइए कि जो कुछ आप योगा से सिखाते हैं वो कहते हैं सेक्स से सब कुछ हो सकता है, तो आपकी जरूरत नहीं. बहुत बहुत सबको इस भौर में प्रणाम. मैंने सोचा था मुझे हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बोलने को मिलेगा, लेकिन सेक्स एंड स्पिरिचुअलिटी कहते हैं बाबा विवादित है, लेकिन ये काम ही मुझे ऐसा देते हैं जिससे विवाद खड़े हो जाए. मीडिया के लोग मुझसे बहुत मित्रवत प्रेम करते हैं. भाई अरुणपुरी जी, बहन रेखा जी, भाई चावला जी और तमाम यहाँ मीडिया के शीर्ष लोग, भीतर से जिन्होंने संन्यास और बाहर से संसार का रूप धारण किया हुआ है, ऐसे हमारे बहुत ही आदरणीय सत्य वेदांत जी, इस विषय में आज तो मैं चाहूँगा कि मैं कुछ सूत्र रूप में ही बोलूँ, क्योंकि व्याख्यान बहुत लंबा हो चुका है. आज इसमें मीडिया के अलावा देश और दुनिया के कुछ बड़े लोग भी हैं. कुछ लोगों को शायद मेरी भाषा पूरी ना समझ में आए, वो किसी अपने बाद में मित्र से ट्रांसलेट करवा लेना. मैं अपनी बात को हिंदी में ही कहना चाहूँगा, और पहले आपने अंग्रेजी में क्योंकि सुन चुके हैं आप. हमारे कुछ पुराने मित्र भी यहाँ पर हैं, मुझे तो यहाँ आने के बाद ही पता लगा. भाई बजाज साहब, मान्य ओपी साहब, मैं छोटी छोटी बातें जिनके पीछे एक बहुत बड़ा दर्शन है और बहुत सरल भाषा में मैं कहना पसंद करूँगा. सेक्स से सृजन है, सेक्स से सृजन है,
उसको आप सृजन को अंग्रेजी में बोलते हैं तो क्रिएशन कहते हैं। क्रिएशन, आप खाली किसी काम को करने में ही क्रिएटिव नहीं होंगे, बल्कि आपकी उत्पत्ति वो काम से होती है। मैं और आप जितने भी धरती पर इंसान हैं वो सब काम के परिणाम हैं। सबकी उत्पत्ति मूलाधार से होती है और मूलाधार पर यात्रा ठहरनी नहीं चाहिए, नहीं तो गलती हो जाएगी। मूलाधार से यात्रा सहस्रार तक जानी चाहिए। हमारी वासना उपासना में तब्दील होनी चाहिए, काम की परिणति मोक्ष में होनी चाहिए। यदि ठहर गए तो गलती हो जाएगी। ये जो हमारा जीवन और ये सारा जगत है, ये हमारी इंद्रियों और बुद्धि रूपी यंत्र के कर्म का परिणाम है। हमारी वाणी, हमारी आंखें, हमारे हाथ, हमारे पैर और हमारे बुद्धि रूपी यंत्र, जिन इंद्रियों से हम काम लेते हैं उसमें से एक इंद्रिय उपस्थ इंद्रिय है और उसी के संयम को हमारे यहां पर ब्रह्मचर्य कहा जाता है। उसके ठीक उपयोग को हमारे यहां पर काम कहा जाता है, सेक्स कहा जाता है। कोई भी इंद्रिय निष्क्रिय नहीं है, उसका एक काम है, वो एक सुनिश्चित उद्देश्य के लिए भगवान ने बनाई है। लेकिन यहां ये जो, जैसे कि हमारे मित्र सत्य वेदांत जी ने भी कहा कि काम बहुत विवादास्पद विषय हो गया है। दरअसल इसमें विधि और निषेध बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। काम विवादित नहीं है, उसकी समझ शायद नहीं हो पाती है। काम की एक परिधि है, काम की एक मर्यादा है। काम शब्द में प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि सेक्स बार बार मेरे मुंह से थोड़ा सा कुछ लोगों को शायद अच्छा ना लगे। यह भी हमारी अवधारणाओं का ही परिणाम है। काम की एक परिधि है, काम की, मैंने कहा, एक मर्यादा है, काम की एक उम्र है। आप 5 साल के बच्चे को आप सेक्स करवाएं, ये ठीक नहीं होगा। वो बोल सकता है, वो सूंघ सकता है, वो खा सकता है, वो विचार सकता है, लेकिन आप उसकी एक उम्र भी है काम की। बाकी इंद्रियों का जो कार्य है वो बचपन से लेकर के मृत्यु पर्यंत बराबर बना रहता है। लेकिन आप काम को, वो जो 25 साल से पूर्व की उम्र है, उस समय में उस काम का, उसके साथ में जो संबंध है वो डिफरेंट होगा। उस समय मैं यदि शब्द बोलूं तो उस समय काम प्रेम के रूप में होगा, करुणा के रूप में होगा, वात्सल्य के रूप में उसको मिलेगा। मां का वो जो मूलाधार से प्रेम ऊपर आ गया, अब उसका हृदय अनाहत चक्र तक प्रेम आ गया, तो वो मां अपने जिसको उसने वासना से उत्पन्न किया था उसको उपासना से सेज रही है बच्चे को। तो आप उसको 25 वर्ष से कम की उम्र में, आप 10-12 साल की बेटियों को आप प्रेग्नेंट होता हुआ देखना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, आप उसको फ्री सेक्स की अनुमति दीजिए। लेकिन यहां कोई जो है, ना कोई तालिबानी सोच से बात हो रही है और ना यहां कोई पश्चिम की अंधाधुंध सोच के साथ बात हो रही है। हमें काम में ज्ञान और ईमानदारी, सच्चाई, दो को जोड़ना पड़ेगा। यो तो जिंदगी के हर चीज के साथ ये दो चीजें जुड़ी हुई हैं। धर्म हो, अर्थ हो, काम हो या मोक्ष हो, जहां सच्चाई नहीं होगी और जहां ईमानदारी नहीं होगी, वो एक ही शब्द है। और जहां ज्ञान नहीं होगा, अज्ञान मूलक अर्थ अनर्थ करेगा, उससे भ्रष्टाचार पैदा होगा, करप्शन पैदा होगा, उससे समाज में दरिद्रता बढ़ेगी, अभाव बढ़ेगा। जैसे अर्थ से अनर्थ होता है बिना ज्ञान के, बिना ईमानदारी के, ऐसे ही काम में यदि ज्ञान नहीं होगा, यदि उसमें ईमानदारी नहीं होगी, तो दुराचार होगा, व्यभिचार होगा, HIV होगा। काम में ईमानदारी नहीं है तो फिर 10-12 साल की, और उसमें ज्ञान नहीं है तो 10-12 साल की बेटियां प्रेग्नेंट होंगी। तो काम में अज्ञान और अपवित्रता आने से, ईमानदारी के न रहने से, बच्चों को यह पता ही नहीं होगा कि
का बाप कौन है। आप यदि अपनी संतानों को ऐसी अवस्था में देखना चाहते हो कि उसको अपने बाप की पहचान करने के लिए डीएनए टेस्ट कराना पड़े, तो आप जो चाहे सो करें। लेकिन शायद ये एक अच्छी सभ्य दुनिया नहीं होगी जहां बेटे को अपनी बाप की पहचान करने के लिए डीएनए टेस्ट कराना पड़े। तो काम में यदि मैंने कहा अज्ञान होगा और अपवित्रता होगी तो उससे बच्चों को अपने पिता का ज्ञान नहीं होगा, अवैध संतान पैदा होंगी और अवैध संतानें, ये दुनिया की हिस्ट्री है, इतिहास है, अवैध काम करती ज्यादातर, कुछ को छोड़ दीजिए। बच्चों के सामने कोई आदर्श नहीं होगा, दुराचार, व्यभिचार, बलात्कार बढ़ेगा, रिश्तों का कत्ल होगा, एचआईवी जैसे रोग बढ़ेंगे, जनसंख्या की वृद्धि होने की संभावना भी रहेगी। और यदि जनसंख्या की वृद्धि नहीं होगी, आपने काम के साथ में ज्ञान नहीं रखा, तो शायद भ्रूण हत्या होगी और दूसरी तकलीफें होंगी। बात कर रहे थे, इसकी मर्यादा भी है। आजकल लोगों को बहुत स्ट्रेस रहता है, मेरे पास आते बोले बाबा जी शादी हुई है, सेक्सुअल डिसऑर्डर शुरू हो गया है। अभी शादी हुई है और मामला गड़बड़ हो गया है, शादी से पहले बर्बादी, फिर कहां से आएगी आबादी। तनाव बहुत है लोगों की जिंदगी में, इसलिए आपको भोग भी करना है तो योग करना पड़ेगा। कपालभाति किए बिना मूलाधार ठीक नहीं होगा, वो तो यहां भी जरूरी है। बिना योग के भोग रोग पैदा करेगा। और योग का काम आपको फिर दूसरा नहीं कि भोग के लिए योग कर रहे हैं, योग जो है आपके सेक्सुअल डिसऑर्डर्स को, चाहे वो इनफर्टिलिटी है, स्पर्म नहीं बन रहा है, वो नहीं बन रहा है, यदि आपके यौनांगों में शिथिलता या दूसरे बहुत प्रकार के डिजीज है, योग का काम उनको दूर करना और आपके भीतर की जो दुर्बलताएं हैं उनको मिटाना। मैं थोड़ा और इस विषय को दूसरे रूप में कहना चाहूंगा। आध्यात्मिकता का उद्देश्य है निम्न चेतना से हमें दैवी चेतना की ओर लेकर के जाना, स्पिरिचुअलिटी। निम्न चेतना जिसको हम असुरत्व कहते हैं, पशुता कहते हैं, मध्यम चेतना जिसको मनुष्यता कहते हैं, उच्च चेतना जिसको हम देवत्व कहते हैं, और दैवी चेतना जिसको श्री अरविंद के शब्दों में अतिमानवत्व कहते हैं। यह हमारे जीवन का एक क्रमिक विकास है। यह कोई अलग योनियां नहीं है, असुर कोई अलग योनि में रहते हो या देवता कोई अलग योनि में रहते हो या अवतार कोई अलग भिन्न रूप में इस धरती पर अवतरित होते हो। हमारे चेतना के 4 स्तर हैं। एक पशुता जिसको हम असुरत्व कहते हैं, जहां केवल भोग, फिर से मैं कह रहा हूं, केवल भोग, केवल सेक्स, यह आदमी को मृत्यु के सिवा और कुछ नहीं देगा, लेकिन उसके साथ में दूसरी चीजें जुड़ेंगी तो हमें ऊपर की ओर लेकर के जाएगा। मैं बात कह रहा था कि जीवन की निम्न चेतना से, पशुता से मनुष्यता की ओर, मनुष्यता से देवत्व की ओर, जहां आप प्रेम से, करुणा से, वात्सल्य से, ऊर्जा से, सेवा से, सद्भावना से भरे हुए हों, आपके जीवन में चारों ओर सृजन ही सृजन हो, आपके कर्म ज्ञान से आलोकित हो, आपका काम ज्ञान से आलोकित हो, आपकी उपासना भी ज्ञान से आलोकित हो, धर्म ज्ञान के आलोक से आलोकित हो, नहीं होगा तो उसमें अधर्म, पाप, अपराध बढ़ेगा। यदि अर्थ जो है ज्ञान से आलोकित नहीं होगा तो वहां भ्रष्टाचार बढ़ेगा। और मैंने कहा कि काम भी यदि ज्ञान से आलोकित नहीं होगा तो उसका मैंने आपके सामने रखा। और यदि आपका मोक्ष भी ज्ञान से आलोकित नहीं है तो वो आपको पलायनवादी बना देगा, आपके जीवन में दरिद्रता लाएगा। इसलिए कुछ लोगों ने दरिद्रता को आध्यात्मिकता मान लिया, वह भी भ्रम है। लोगों को इससे भी आपत्ति होती है, बोले बाबा तो एक तरफ आध्यात्मिकता की बात करता है और दूसरी तरफ ये तेरा भौतिक वैभव बढ़ रहा है। मैंने कहा तुझे तकलीफ क्या हो रही है? इसलिए कि मैं तेरी दरवाजे के ऊपर कटोरा लेकर के मांगने नहीं आता। मैं दरिद्रता को आध्यात्मिकता नहीं मानता। मैं मानता हूं मैं पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ जीऊं और मैं भौतिक विकास भी करूं और आध्यात्मिक विकास भी करूं। और ये मेरी संस्कृति है, ये मेरी परंपरा है और ये हमारा आदर्श है। और यही इस जगत को
समृद्ध बनाने का, सर्वांगीण रूप से विकसित करने का माध्यम है। मैंने जो है थोड़ी पहले बात की कि हमारे यहाँ पर जो काम का निषेध है उसके पीछे भी एक साइंस है, चाहे वो समय की बात हो, चाहे वो रिश्तों की पवित्रता की बात हो, चाहे जो है हम सेक्स को दरअसल हम कितना समझ पाते हैं, कितना नहीं समझ पाते। मुझसे कुछ लोग प्रश्न करने लग जाते हैं, बोले बाबा आप सेक्स के बारे में बोलने लग जाते हो। मैंने कहा मेरा काम डॉक्टर का है, जरूरी नहीं कि डॉक्टर को कैंसर होगा तभी वो इसका इलाज बताएगा। हार्ट अटैक उसको आएगा तभी ऑपरेशन कर थिएटर में जाएगा। खैर, आज का जो विषय है, मैंने कहा हमारी आध्यात्मिकता भी हमें निम्न चेतना से उच्च चेतना की ओर, दैवी चेतना की ओर, दैवी चेतना माने जहां माध्यम बन जाते हैं उस पराशक्ति का, उस तरफ लेकर के जाती है, और वासना भी हमें उपासना की ओर लेके जाती है। शरीर में नीचा स्थान है मूलाधार, ये सेक्स का, ये सहस्रार, ये आध्यात्मिकता का है। तो ये सेक्स और स्पिरिचुअलिटी ये हमारे भीतर के ही जीवन की दो चेतनाएं हैं, और निरंतर चेतना के शिखर पर आरोहण पाना ये हमारी ज़िंदगी का ध्येय है। हम यदि केवल सेक्स के पीछे पड़ जाएंगे और दूसरी चीज़ों को साइड में कर देंगे तो मुझे लगता है हमारे जीवन में क्रूरता आ जाएगी, हमारे जीवन में कष्ट और पीड़ाएं आ जाएंगी। ये किसी भी क्षेत्र में होता है। अति सेक्स, अति आहार, सब जगह अति सर्वत्र वर्जय। मुझे लगता है मैंने कुछ बातें आपके बीच में रखी हैं, मूल बिंदु रखे थे। विस्तार मैंने किसी का इसलिए नहीं किया क्योंकि आगे आपको भी प्रश्न का वक्त देना है। मेरे से पूर्व प्रभु चावला जी ने कुछ मुझ पर मीठे मीठे कटाक्ष भी किए, वो उनको हमने अधिकार दे रखा है, इसलिए उनका मैं उत्तर यहाँ नहीं दूंगा। मेरा मौका आएगा तब मैं इनको भी देखूंगा। और बात कही होमोसेक्सुअलिटी की। अब भाई देखो, मुंह से खाना खाया जाता है, ये सबको पता है। अब क्योंकि मैं नीचे से खाऊंगा तो खाए। अब इस बात को लोग जो है कुछ लिटरेट इडियट्स होते हैं, माफ करना मैं बहुत थोड़ा तीखा शब्द बोल दिया मैंने। वो कहते अरे भाई मुंह से खाने के लिए भगवान ने मुंह को बनाया है ना, अब बीमार हो गए हो तो यहां से नली डाल के खा लो, या नाक में से नली डाल के खा लो। अब नाक में नली उसको डाला जाता है जो बीमार होता है, बाकी जो स्वस्थ आदमी मुंह से आहार करता है। तो भाई बहनों, ये होमोसेक्सुअलिटी के बारे में मेरा एक बहुत गहरा उत्तर था। जिसको समझना है वो समझ ले, और जिसको उल्टा करना है वो मेरे पास आएगा तो मैं आगे समझाने की कोशिश करूँगा। और अब जो है आज का जो विषय था उसके बारे में मैंने जो बातें कही हैं, मुझे लगता है हम सभी इन बातों से कमोबेश सहमत होते हैं। लेकिन हम जो है जो फ्री सेक्स की जब बात करते हैं, कोई चीज़ दुनिया में फ्री नहीं है। कोई चीज दुनिया में फ्री नहीं है। फ्री सेक्स होता क्या है? जिस दिन ये धरती अपनी परिधि से हट जाएगी, एक नियंत्रण से, मर्यादा से हट जाएगी, उस दिन प्रलय हो जाएगा। परिधि में धरती है, परिधि में सूरज और चांद है, परिधि, मर्यादा, एक ज्ञान और सत्य का बंधन, ये सब जगह लगा हुआ है। तो फ्री सेक्स नाम की कोई चीज होती नहीं है। नियंत्रण में सबको रहना होता है, चाहे वो मीडिया के लोग हों, चाहे मैं हूं, बाबा हो, बाबू हो, एक न्यूज रीडर से लेकर के, टाइम अतिक्रमण हो जाता है तो ये मुझसे बोलते हैं अभी लेना होगा हमें एक छोटा सा ब्रेक। वहां पर भी ब्रेक का बंधन है। सब जगह मर्यादा है, रिश्तों की मर्यादा, संयम की मर्यादा, पवित्रता की मर्यादा, सब चीजें मर्यादित हैं। अतिक्रमण होगा तो फिर तोड़फोड़ होगी। दिल्ली में थोड़े दिनों पहले
इसके लिए बड़ा अभियान चला था। तो मुझे लगता है हमें फ्री सेक्स शब्द से बाहर निकालना चाहिए। फ्री कुछ भी नहीं है, दुनिया में सब कुछ एक मर्यादा में चल रहा है, एक नियम में चल रहा है, और उसी परिधि में यदि हम सेक्स को देखते हैं तो ये विवादित नहीं, ये निर्विवादित विषय होगा। मैंने कुछ तीखी तीखी, कुछ मीठी मीठी, कुछ छोटी छोटी बातें आपके बीच में रखी। यदि आपको पसंद में आई हों ये बातें, तो आप एक अच्छे पिता बनना, एक अच्छे पुत्र बनना, एक माँ बनना, और भाई किसी को ना समझ में आए हो तो भाई जो फ्री होल्ड हैं उनके लिए मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।